स्क्रीन विजिबल है सबको? Okay. So, like, do I have to introduce and then um, hello? Today we are talking about Git and GitHub. Uh, Starting with, like, what we have in this presentation is like what is actually Git and GitHub, and what is the difference between Git and GitHub, and then the key features of them, and then the basic workflow of GitHub, and then I also have a bonus slide. So let's start with what is Git and GitHub. So Git and GitHub are sorry. So Git and GitHub are like two different platforms, but with the same base, which is Git. So Git is a version control which is used to track changes in a local machine. uh, that's where GitHub comes. So Git is for local machines, and GitHub is another platform for like storing code in cloud. Or so we'll talk Git about GitHub in a bit. First, let's talk about Git. So Git is a version control used to store data, store and keep track of all the local code base created by Linus Torvalds in 2005. So what is the purpose of Git is it allows multiple developers to work on a project simultaneously without any conflicts. So so talking about now, let's talk about GitHub. So what GitHub is actually is easy to use environment which is based on Git, but is more intuitive to use and does not require CLI, which is command line interface. So so GitHub is actually a proper software developed for using Git or storing code bases. Is it like clear? Yeah, okay. So moving on, what is the difference between Git and GitHub? So basic differences are just like that Git is a local version control system which stores code locally, and then GitHub is storing all the code bases online with that GitHub software. Uh, and Git uses command line interface in which we actually type commands to store or to perform some actions. And GitHub, as I mentioned, it is a proper software, so it is way intuitive than Git. So it uses a web-based interface, proper interface. And lastly, Git uh, manages code history and branches, and GitHub is like an evolved version of the same, but it is used for collaboration, project management, and additional features. Okay. Moving on to the third thing, key features of GitHub. So I think the work of Git is done here. I've basically explained what is actually Git. Now, what we in real time, in real working time, we use is what is called GitHub. So basically, most of the time we'll use GitHub. So I'll talk mostly about GitHub now. So key features of GitHub is repositories. So repositories we can say is like a folder in which we can store multiple projects. Then we have pull requests. So any actions like propose, discuss, and review changes to a code base is what we say, we use short form for pull request, PR. So like proposing or discussing something, we use pull requests for. Then issues, we track bugs, enhancements, any changes in the code, or any task to be or any task or any line to be changed is what comes under issues. And then GitHub pages is like storing static websites.
or we can say host static websites directly from a repository. Okay. Hello, can we continue? Okay. Then we have basic workflow of Git and GitHub. So I'll be talking about only GitHub now because that is what is more important. So basic workflow of GitHub includes processes actually 7 steps or process, we can say. First is forking. So forking means that creating a copy of someone else's work or someone else's project, and then uh, like after that we'll use cloning, which we use git clone command. I'll come to commands later on, but yeah, second step is cloning. So downloading the forked repository, which is the forked folder, or we can say the actual code, downloading it in your local machine, and then creating a branch. So to be very honest, I actually don't know the exact difference between a repo and a branch, but still, like if someone can explain to me what is actually what difference is it between branch and repository? If hello, मतलब कोई कोलैबोरेट करना चाहता है अगर, क्योंकि मुझे ब्रांच और रेपोजिटरी में डिफरेंस इतना पता नहीं है, बट इफ यू वांट टू ब्रांच और रेपोजिटरी में मतलब मेरे को इतना डिफरेंस समझ नहीं आता, तो इफ समवन वांट्स टू ओके, तो रिपोजिटरीज में के अंदर बहुत सारी ब्रांचेस होती है, उनमें से एक ब्रांच होती है मेन ब्रांच किसकी होती है, जो कि और मतलब जो क्रिएट करता है रिपोजिटरी उसकी मेन ब्रांच होती है, मतलब उसके अंडर होती है मेन ब्रांच। फिर जब किसी और यूजर को एज ए कोलैबोरेटर या फिर कोई और फॉर्क करता है, उसमें अपनी मतलब फॉर्क भी नहीं, मतलब उसमें अपनी नई ब्रांच बनाता है ताकि वो पीआर मार सके, तो ओके वो उसमें अलग चेंजेस करता है और इसमें अलग चेंजेस करता है। ओके ओके ओके। तो हाँ बेसिकली जो ब्रांच है वो कम्स अंडर अ रेपोजिटरी, जिसमें हम लोग कोड को कॉपी करके अपना कुछ एग्जिस्टिंग जो भी हम लोग को फीचर डालना है या फिर कोई कोड डालना है, ऐसा समझ सकता हूँ क्या मैं? ओके। हाँ हाँ। ओके ओके। तो repository is like a folder and branch is like a file. नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एज्यूम करो कि एक ट्री है, ठीक है, वो आपकी रेपो है, ठीक है, उसमें मल्टीपल ब्रांचेस होती हैं, जैसे ट्री में होती हैं, ऐसे ही आप अपने फोल्डर में भी मल्टीपल ब्रांचेस क्रिएट कर सकते हो। ओके तो अब क्या है ना कि आप अपनी ब्रांच में सेम जो भी कोड मेन रेपो में था, जो भी वो आपकी ब्रांच में भी सेम होगा, ठीक है। तो अब आप उस पर जो भी चेंजेस करेंगे वो आपकी ब्रांच में ही रिफ्लेक्ट होंगे, ठीक। ओके जब वो कोई भी चेंजेस किए आपने, वो मेन में रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, मेन ब्रांच से उसका कोई लेना देना नहीं होगा। लेकिन जब आप पीआर पुल रिक्वेस्ट करेंगे उस ब्रांच को, जो भी आपने आपकी ब्रांच है उसको मर्ज करने के लिए, आपने जो चेंजेस किए हैं उसको मर्ज करने के लिए मेन ब्रांच में, तब वो ब्रांच मेन के साथ कंपेयर होती है, ठीक है। मेन मीन्स रूट ब्रांच, ठीक है। ओके ओके। जब कंपेयर होगी उसमें देखा जाएगा कि कौन कौन से चेंजेस हैं। अगर ओके ओके। तो इसमें सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट आता है हेड का, ठीक है। हेड, दोनों ब्रांच का अगर हेड एक ही पोजीशन पे है, मतलब वो ब्रांच भी 4 स्टेप चल चुकी है, आपकी ब्रांच भी 4 स्टेप चल चुकी है, तो मर्ज करने में कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे अगर उस फाइल में अगर ज्यादा चेंजेस नहीं है। अगर आपने जिस फाइल में काम किया किसी और ने नहीं किया है तो कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे। लेकिन अगर दोनों लोगों ने किया हुआ है, मेन में भी उसी फाइल में काम हुआ है, आपके में भी हुआ है, तब वो कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो जब पीआर देंगे तो उस कंपेयर कराता है गिट हब, मतलब गिट कराता है कि इसमें क्या है, दोनों ब्रांचों में क्या मतलब क्या क्या है फाइल, इसमें चेंजेस, तो चेक कर लेगा। अगर चेंजेस में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा तो मर्ज
करने का ऑप्शन देगा, आप मर्ज क्लिक करेंगे तो आपका जो भी कोड Okay. था वो मेन ब्रांच से मर्ज हो जाएगा, यानी आपकी जो Okay. ब्रांच थी वो मेन ब्रांच में मर्ज हो जाएगी। आप चाहो तो आप उस ब्रांच को डिलीट कर सकते हैं, या फिर आगे भी काम करना है तो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, मेनली ये Okay. होता है। Okay. Okay. Thank you so much. So thank you so much. I'm going to continue. So after creating a branch, we make changes like editing code, adding files to it. G. Talking about like forking, cloning, creating branch, and then fourth is making changes to it, like editing code, adding files to it. And after that, the fifth step is committing changes. So actually, committing changes is when you are done with your editing your code and adding some files, you can just save it with some text or a message so that the person who is going to access it, or if it is only you that are you going to access it in the future, the file, then you can like clearly identify it by that message. So that is what commit changes does. After that, we have push changes, which is actually uploading your code to uploading your changes to GitHub, or in as I was explained that we can upload to our main branch, if I'm right, and then we'll open pull request. So pull request, I was also confused, but now I'm like I'm I've been explained pretty nicely what pull request and creating a branches. So finally we'll use open pull request to merge the code we have edited to the main branch or the main original repository. So yeah, that's it. After that, I have a bonus slide which includes some of the Git commands, which has Git in it, initializing a Git repository, Git clone to clone an existing repository, Git status to check the status of your repository,